More than 10,000 people living in 10 panchayats in the Kathua district of Jammu and Kashmir have been eagerly awaiting the completion of a bridge over the river Uj for a long time. Work on the Juthana bridge has been suspended for the past 4 years due to shortage of funds. कम से कम 70 साल से हमारे कुछ पुल नहीं थी मिला इधर, ना कोई रास्ता मिला, लेकिन 70 साल के बाद ये पुल मिला है। बीजेपी ने दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है, लेकिन 7 साल से ये भी लटका पड़ा हुआ है। हम डॉक्टर साहब से ये उम्मीद करते हैं कि इसका काम जल्दी है जल्दी लगना चाहिए और बरसात आने से पहले ये काम शुरू होना चाहिए। To reach the district headquarters, residents from this area are forced to cross the Uj river using the under construction Juthana bridge. परेशानियां देखो किन्नी मुश्किल कन्नै अस चढ़ियां, कोई थैला लैना पौंदा, कोई सब्जी लैना पौंदी, कोई कुछ लैना पौंदा घरे, कि'यां जाना। इत्थै 3-4 जनानियां चक्कर आया इत्थै ते बैठियै इ'यां बड़ा मुश्किल ने बैठियै ते फड़ी लैंदे रेह्। बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है इधर चलने में। तो कितने बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, पुल कैसे पार करते हैं? बड़ी मुश्किल से जाते हैं हम, ऐसे मतलब गिरने की भी मतलब कभी भी गिर सकते हैं नीचे। हाँ जी। The Jammu Kashmir Projects Construction Corporation has put up a signboard at the site warning people not to cross the under construction bridge. However, due to lack of an alternate route, school children, women and other residents are compelled to use it. हाँ जी।